Jurisprudence, definition, nature, scope, and importance of the jurisprudence we are discuss in this video. Okay, so let's start. The term jurisprudence is a Latin term having meaning knowledge of law or skill of law. So juris is equal to law, and prudence means knowledge of law. It is defined as a study of fundamental legal principle, including their philosophical, historical, and this psychological basis, and in analysis of legal concept. It is type of investigation into the essential principle of law and legal system. So it is a science of the first principle of civil law. ओके लेट्स बिगिन एंड यहाँ पे बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है लाइक देयर इज अ ऑथर हु डिफाइंड व्हाट इज अ jurisprudence. So Solomd say the jurisprudence is defined as a science of law. In science there is a systematic study of nature, and jurisprudence there is a systematic study of law. Austin also defined, like according to the Austin, jurisprudence is a philosophy of positive law. Okay, and it's govern all the action of human being which are illegal and unjustified. ऑस्टिन ने कहा है कि जो जो स्टूडेंट्स है ये फिलोसफी है पॉजिटिव लॉ की, और उसने कहा है कि ये गवर्न करती है ह्यूमन बीइंग की जो एक्शन है, इनलीगल एक्शन है और अनजस्टिफाइड एक्शन है, उनको सबको ये गवर्न करती है. Holland also defined jurisprudence means the formal science of positive law, and it is an analytical science rather than the material science. Now we are going to discuss the nature of jurisprudence. It is uncodified law, it's not a codified law, and it is common law for all the countries. This law has been developed and not enacted by the legislative. Like ये जो law है ये अपने आप ही develop होता है. It's not enacted by the legislatives, and it is also called the legal theory. There's an actual study of the term law in jurisprudence. There is no scope for amendment, and it is developing out of legal knowledge of the people. So scope of the jurisprudence we are going to discuss here. Scope of jurisprudence. So there's a wide scope of jurisprudence, and it is related to so many other subjects. It can be explained as follows. So jurisprudence and economics. Economics is the science of wealth. जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी साइंस है वेल्थ के लिए, प्रॉपर्टी एंड प्रोस्पेरिटी. प्रॉपर्टी की साइंस है, आपकी वेल्थ की साइंस है इकोनॉमिक्स. सो पीपल कमिट मैनी इनलीगल एक्टिविटीज फॉर शेक ऑफ द वेल्थ, एंड लॉ इज ट्राई टू कंट्रोल इनलीगल एक्टिविटीज एंड टू पनिश द क्रिमिनल्स. सेम लॉ is studied in jurisprudence, and therefore jurisprudence and economics are correlated. लाइक जो लोग अगर वेल्थ बनाने के लिए कोई इनलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए हम सेम लॉ jurisprudence में पढ़ते हैं. तो jurisprudence and economics are connected with each other. Okay, now the next one is jurisprudence and politics. So law are enacted by the political parties. जो law बनता है और जो enacted होता है वो political parties के द्वारा होता है, who are elected by the people कॉल बाय लेजिस्लेचर. जो लोग हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उन लोगों को हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं. लेजिस्लेचर ही लॉ बनाती हैं. So jurisprudence study law enacted by the political parties who are in power, and therefore jurisprudence is also related with the political science. Okay, so there is a connection between jurisprudence and politics. And now the scope of jurisprudence and psychology. ओके, अब साइकोलॉजी बोलेंगे आप. साइकोलॉजी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ सोसाइटी. सो इट स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. लॉ इज रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट. बेसिकली हम लोग को सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ चाहिए. सो विच इज स्टडी इन jurisprudence and it is related to the psychology. So society, psychology and jurisprudence are connected with each other. ये एक ट्राइंगल की तरह आप समझ सकते हैं. सो बेसिकली देयर इज अ स्कोप ऑफ आपका jurisprudence and psychology. Now the last one is jurisprudence and ethics. Is ethics means morality. Okay, so ethics or morality is the base of law. Many law have been enacted by considering the morality, and but it is not in all the law. Therefore law and moralities are
ethics are related with each other. Okay, so, so it's all about the scope of jurisprudence. Jurisprudence with connected with the economics, politics, psychology, morality, ethics. So सबसे ये jurisprudence connected है. Importance of jurisprudence. So it is compared with the science which show the importance of jurisprudence. It study the legal system of all the countries. It's called a foundation or base of the law, and study of jurisprudence is much important. It is related to many other subjects which show the importance of jurisprudence. It make study of time law and sources of law which is necessary, and it is like a tool in hand of legal expertise which is helpful in the interpretation of the law. So ये सारी importance है jurisprudence की, like I will explain you one more time. So जो importance है, like it's compared with the science which show the importance of the jurisprudence. तो हम लोग उसको साइंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसकी importance कितनी है, because the laws are like science, and the law are connected with each other. And the study of legal system in all the countries in jurisprudence में हम वो करते हैं कि सभी कंट्रीज के हम लोग समझते हैं कि वहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो वहाँ की सिचुएशन है, उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे लॉ बनते हैं, और वो नेचुरली ही लॉ बनते हैं. लॉ आर बिकम इटसेल्फ, और लॉ उनको ही जैसे कस्टम और यूसेज से लॉ बन जाते हैं अपने आप. ओके, so it is called the foundation or the basis of the law to study the jurisprudence, and it is very important, right? And it is related to many other subjects to show the importance of jurisprudence. Okay, and to make the study to the term law and the sources of law which is necessary, like हम लोग बेसिस समझते हैं कि लॉ कहाँ से आया है और कैसे वो लॉ बना है. Okay, so jurisprudence is like a tool इन द लीगल एक्सपर्टीज. जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं, उन लोगों को हेल्प करता है लॉ को इंटरप्रेट, लाइक उसकी इंटरप्रिटेशन करने में, जिससे हम लोग को समझ सके वो लॉ बना कैसे है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी और उसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और अगर कोई अनरिटन लॉ है तो उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करें कि उस सर्कमस्टेंसेस पे हम लोगों को जो है लो बनना चाहिए या लो होना चाहिए, तो उसको हम लोग अमेंडमेंट करें या उसको यूज करें, तो वो सब चीजें हम लोग jurisprudence इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके, so it's all about the jurisprudence. Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you.